Hello everyone. So today we'll discuss else if ladder in C. Already we have discussed simple if and else statement. Today we'll discuss else if ladder. Why we need the else if ladder? If there is a multiple condition, okay, then we need the else if ladder. Simple if else में क्या हो रहा था? If yes or no, only हमारा आंसर क्या आ रहा था? either true और false में. तो पहले प्रोग्राम करने से पहले आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसका सिंटैक्स जानना जरूरी है. सिंटैक्स मतलब ग्रामर. तो क्या है उसका सिंटैक्स? जैसे मैंने लिया इफ, देन आएगा कंडीशन, देन हमारा स्टेटमेंट, ओके, देन एल्स इफ अगेन कंडीशन, देन आएगा स्टेटमेंट अगेन, else if again condition, then next again statement. अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं, ऐसे जितने भी आपको चाहिए आप एलसिफ करके दे सकते हो. एट द एंड वी हैव एल्स, देन स्टेटमेंट. ओके, सो दिस इज द सिंटैक्स. हमेशा प्रोग्राम लिखने से पहले आपको जो सिंटैक्स है ना उसको फॉलो करना पड़ेगा. सिंटैक्स कैसे फॉलो करोगे? मतलब इफ कंडीशन, मतलब आपको ये कंडीशंस ही राउंड ब्रैकेट में ही कंडीशन लिखना है. आप बोलोगे नहीं मुझे ब्रैकेट देना नहीं है, आप ब्रैकेट इसमें कर्ली ब्रेस दे देंगे, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे, चलेगा नहीं. बिकॉज सिंटैक्स मतलब ग्रामर. यू हैव टू फॉलो द ग्रामर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, बहुत सारे बच्चे जैसे एलशिप है, इसे स्पेस है, आप स्पेस हटा दोगे तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा. दैट इज this is the syntax. If anything is missing in that particular syntax, that is known as your syntax error, that is your grammatical error. Okay, so this is all about your syntax. So based on that we will do the program. सबसे सिंपल प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम. ओके, प्रोग्राम में दे रहे हो, राइट ए प्रोग्राम which number is greater. Write a program to find which number among यानी 3 4 जितना आपको चाहिए दे सकते हो नंबर. सिंपल है. ओके, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये है. जैसे अगर मैंने फाइंड द ग्रेटर एमंग यानी 3 बोला तो आप स्मॉलर भी आपने फाइंड आउट कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए. ओके, तो जैसे हमने माइंड पे बताया था मैंने, कितना नंबर मुझे चाहिए, 3 नंबर चाहिए, उनमें से ग्रेटर फाइंड आउट करना है यूजिंग एलसिफ लैडर. हाउ कैन यू डू इट? न्यू, देन हमारा फाइल. ओके, then here we will write the coding.
now we will write here return, क्या लिखेंगे 0. Okay, return 0 because int main, so we will write here return 0. So now what we will do, so return 0. After that you have to compile and run it. ओके अभी हमें क्या करना है, कंपाइल करके रन करना है. 3 नंबर एंटर करो 67, तो सी इज ग्रेटर. क्लियर हो गया. सो दिस इज ऑल अबाउट योर एल्स इफ लैडर. ओके, तो जैसे मैंने अभी ग्रेटेस्ट दिया, तो आप लोग कर सकते हो कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एमंग एनी 3, ऐसे आप कर सकते हो. इसको बेस करके हम बहुत सारे प्रोग्राम भी मैं आपको दे दूंगी, तो आप वो प्रोग्राम भी ट्राई कर सकते हो, जैसे रिलेटेड टू एल्स इफ लैडर. ओके, तो आज के लिए इतना ही है. आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख लेना. अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन so that you can get the important update. If you are old, then also press the bell icon so that you can get the important update. Okay, तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.